Hello, what's up, guys? I hope you all are fine. So, guys, as all we say, welcome in reply of thank you. So, guys, its impact on our professional answer. So, guys, let's learn alternative only welcome. And, guys, when you say only welcome, it's make your answer too basic. So, guys, you should learn this sentence and include your sentence. So it's like, it was my pleasure and I am so glad you liked it, and of course it's an honor. You are most welcome. So guys, ये sentences थे. So आप इन sentences को अपने जो आप अगर किसी को reply करते हो, अगर आप कोई आपको thank you कहता है and अगर आप reply करते हो, तो guys you can include these sentences, these alternative in your sentence. तो गाइस ये आपका रिप्लाई थोड़ा अच्छा बनेगा, जिससे कि गाइस वेलकम जो होता है वो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेसिक बनाता है. और यू कैन इंक्लूड दिस ऑल्टरनेटिव. व्हाट इज योर फेवरेट सेंटेंस इन दिस ऑल्टरनेटिव? प्लीज मेंशन इन कमेंट. एंड गाइस माय फेवरेट इज इट वाज माय प्लेजर. गाइस लास्ट टाइम हमने थैंक यू के ऊपर बनाई थी और गाइस अब हमने बना दी वेलकम के ऊपर. तो गाइस ऐसे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी. तो गाइस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट मतलब अरे कहना क्या चाहते हो?